हेलो गाइस समस्त मोर नमस्कार। आज एसएसबी थ्रो रो बातवा नोटिफिकेशन देखिबा कहा पई बारसी फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल केटा कैटेगरी रो हायर सेकेंडरी 488 कैटेगरी ସେଥିରୁ total post କେତେ the prospective candidates for requirement of 1061 number of post of postgraduate teacher scale of pay of केते 44,900 to 1,42,400 pay matrix of level 10 plus usual DA admissible for time to time तापरे कौन कहला जे candidates are required to apply online through website www.ssbodisha.ac.in तो स्टार्टिंग केबे ऑनलाइन अप्लाई करे स्टार्टिंग केबे 18 मार्च 2024 रु क्लोजिंग केबे होची 18 अप्रैल 2024 11:45 रात 11:45 तो वैकेंसी पोजीशन देखिबा एठी बॉटनी केते 29 केमिस्ट्री रे 35 वैकेंसी अछि कॉमर्स रे 21 टा वैकेंसी इकोनॉमिक्स रे 141 टा वैकेंसी एजुकेशन में 50 टा वैकेंसी इंग्लिश में 148 टा ज्योग्राफी में 5 टा जियोलॉजी में 2 टा हिंदी में गोटे वैकेंसी हिस्ट्री में 146 टा वैकेंसी होम साइंस में 7 टा वैकेंसी आईआरपीएम में 2 टा वैकेंसी लॉजिक में 38 टा वैकेंसी मैथमेटिक्स में 39 वैकेंसी सेमती ओडिया पाई 130 टा वैकेंसी फिजिक्स पाई 35 टा वैकेंसी पॉलिटिकल साइंस पाई पॉलिटिकल साइंस पाई 124 टा वैकेंसी साइकोलॉजी पाई 7 टा वैकेंसी संस्कृत पाई 38 टा वैकेंसी सोशियोलॉजी पाई 15 टा वैकेंसी तेलुगु पाई 2 टा वैकेंसी उर्दू पाई गोटे और जूलॉजी पाई 25 टा सेमिति मिसी की 1161 टा टोटल वैकेंसी बाहरी छी ସେଥିରେ एज लिमिट केते रही छी 21 वर्ष रु 38 मैक्सिमम फिजिकल हैंडीकैप मान करो 40% रु अधिक थिबा दरकार एसटी एससी मान को 5 वर्ष रिलैक्सेशन आउ एजुकेशनल एसईबीसी आउ एक्स सर्विसमैन से माने 5 वर्ष आउ 10 वर्ष रिलैक्सेशन बयसर 10 वर्ष रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पाई आउ 15 वर्ष का पाई एसटी एससी एसईबीसी फिजिकल हैंडीकैप पाई तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रहिबो कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री post or integrated 6-year postgraduate master's course from regional college of education recognized by NCERT at least 50% mark in aggregate or its equivalent grade तो मास्टर डिग्री सहित कौन थिबा दरकार तर 50% रखथिबा दरकार ए कैंडिडेट मस्ट हैव एक्वायर्ड बीडी और इक्विवेलेंट डिग्री recognized by national council for teacher education बीडी सर्टिफिकेट थिबा दरकार BD qualification is mandatory eligibility criterion for the post of PGT in कहा पाई मैंडेटरी न PGT रो कॉमर्स एजुकेशन जियोलॉजी होम साइंस लॉजिक
फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, IRPM, तेलुगु, उर्दू ये सब्जेक्ट मान बीईडी मैंडेटरी नुह। तो बीईडी कहाँ मैंडेटरी? बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, जूलॉजी ये सब्जेक्ट बीईडी मैंडेटरी। मोड ऑफ सिलेक्शन केमती रहिबो? द रिटन टेस्ट 100 मार्क 150 मार्क रहबो, एमसीक्यू टाइप आ कैरियर असेसमेंट 50 मार्क। बीडी आउ हमर पोस्ट ग्रेजुएट करथा दरकार कैरियर असेसमेंट पई। तो एटी कोन कहला जे written test of 150 mark in concerned subject as per the syllabus given in the website of SSB website रे syllabus दिया है से अनुसार there will be 100 question in total of multiple choice type, each carrying 1.5 mark। ताले 100 टा क्वेश्चन रु गोटे क्वेश्चन ठीक कले 1.5 मार्क मिलिबो आ ताको भूल कले 0.5 मार्क कटिबो। और टोटल ड्यूरेशन के दिया हबो 2 आवर्स 2 घंटा एग्जाम पाई 2 घंटा दिया हबो। तो यूआर पाई 40 शतकड़ा क्वालिफाइंग मार्क आ एसटी एससी एससीबीसी आ पीडब्ल्यूडी पाई 30 शतकड़ा तांको क्वालिफाइंग मार्क। तो कैरियर असेसमेंट पाई कोन केते केते मार्क दिया हबो को कैरियर थिले बा कोन से सक्सेस हितले को सर्टिफिकेट थिले। मैट्रिकुलेशन पाई मार्क 5 मार्क दिया हबो, फर्स्ट डिवीजन करले 5 मार्क, सेकंड डिवीजन मैट्रिक पास करथिले 4 मार्क, थर्ड डिवीजन पास करथिले 3 मार्क। सेंति प्लस 2 टोटल मार्क 5 मार्क दिया हबो, सेतिरे जदि फर्स्ट डिवीजन पास करथिले 5 मार्क, सेकंड डिवीजन करथिले 4 मार्क और थर्ड डिवीजन करथिले 3 मार्क। सेंति प्लस 3 और जदि टोटल 10 मार्क सेतिरु फर्स्ट डिवीजन कले 8 मार्क, सेकंड डिवीजन कले 7 मार्क, थर्ड डिवीजन कले 6 मार्क। सेतिरे ऐड केते हबो डिस्टिंक्शन सहित पास कले 2 मार्क ऐड हबो। सेंति पोस्ट ग्रेजुएशन करथिले 15 मार्क। This will be calculated on the basis of aggregate percentage of marks secured in the postgraduate examination। आ बीईडी करथिले 15 मार्क एक्स्ट्रा दिया हबो। In the case of post of PGT in a subject where BED qualification is not mandatory, career assessment in respect of post graduation shall be done out of 30 marks। ताले जो मानकर बीईडी मैंडेटरी नहीं सेमान को पई 30 मार्क दिया हो। In the case of post graduation BED candidate, if candidate secure 70% mark in aggregate in post graduation BED in his or her career mark in post graduation or BD shall be calculated as follow। এই ভাবে ক্যালকুলেট হবে যদি সে 70% রখিথিব ধরা যাও সেটা কইলা। तो जॉन ऑफ एग्जामिनेशन कोटी कोटी रहिबो बालेश्वर, बरहमपुर, भवानीपटना, भुवनेश्वर, कटक, जयपुर, केउझर, राउरकेला, संबलपुर ये जगह रे एग्जाम हेबो। In case of sufficient number of candidates are not available for any of the zone excluding Bhubaneswar, the candidate opting for those zone will be accommodated at their nearest zone। यदि धरा जो बालेश्वर रे टोटल जति कैंडिडेट अवेलेबल थिबा दरकार सेतकी हेबे नहीं जदि तांको पाखो जोन को तांको शिफ्ट करा दियो ऑप्शन मिलबो। ताले एप्लीकेशन फी केते रहिला नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल फी of res 500 only for candidate UR ଆଉ SCBC UR ପାଇଁ 200 ଆଉ नहीं सॉरी 500 टंका एप्लीकेशन फी ଆଉ 200 काहा ପାଇଁ SC ଆଉ ST PWD एमानको ପାଇଁ 200 UR ପାଇଁ सॉरी आधा देखें
यूआर ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଫି, ଏସି ଏସଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦରକାର। এই ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। The procedure of application will have to apply online. Successful candidates shall be asked to submit their certificate and other documents for verification by SSB on the date to be notified। ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର? The candidate must be Indian citizen. Candidate should be able to speak, read and write Odia. He or she must be passed middle school examination with Odia language subject or passed matriculation or equivalent examination with Odia as medium of examination in non-language subject और 7 क्लास रो हायर पास करते दरकार और ओडिया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्ट बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए कौन को तो कहले ये कौन कहले सर्टिफिकेट्स and or documents to be submitted at the time of verification। कौन कौन जदि एग्जाम रे क्वालिफाई कल को सर्टिफिकेट भेरिफिकेशन ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦରକାର ହେବ। ହାର୍ड କପି ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट नहले मार्कशीट इशूड बाय recognized university, BEd certificate and marksheet issued by NCTE recognized university or 2 passport size photo similar to one upload in online application। conduct certificate कॉलेज बा यूनिवर्सिटी रू जोटा लास्ट पास आउट थिबे कास्ट सर्टिफिकेट जो मन को दरकार रिक्वायर्ड ओडिया पास सर्टिफिकेट जेंत कि 10th क्लास सर्टिफिकेट चढ़ जो और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कमांडिंग ऑफिसर थिले पीडब्ल्यू थिले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैंडीकैप सर्टिफिकेट स्पोर्ट पर्सन थिले आइडेंटिटी सर्टिफिकेट गोटे जदि जॉब करथिबे ताहले तांको ପାଇଁ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ताहले हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ओडिशा एई वेबसाइट अप्लाई कर पारे। Candidate are required to upload their latest passport size photograph within 15 days before the submission of application along with scanned image of their full signature or left thumb impression which must be clearly identified, otherwise the application of the candidate is liable to rejected। ଏଗୁଡ଼ା ତାହେଲେ ଦରକାର କ'ଣ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦରକାର ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ଆଉ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଦରକାର। ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ବା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।